Together to welcome the CEO of Justdial, Mr. BSS Money, and the brand ambassador of Justdial, the one and only, the man who needs no introduction, Mr. Amitabh Bachchan. Welcome, gentlemen. Let's give them another big round of applause. Yeah, thank you. So thank you so much for being here tonight, you to arrive here and to give us more of an insight on it. But first of all, we'd like you to do the honors and do the unveiling if you could. Good evening, ladies and gentlemen. Very delighted to be here at the launch of the new concept with Justdial, which is called Search Plus Engine. Up to now, as many of you know and that have been using Justdial, it was providing you certain facilities, and Money here thought that with each passing day, our requirements are getting more and more liberal, and we need more information. And Search Plus is really going to provide a lot more than what you already have on Justdial. So the idea really was to provide certain elements where you would not have to bother traveling out to a grocery store or making a call to book your movie tickets or just buying groceries. Everything can now be done sitting at your home. You go to Justdial, you go to Search Plus, and it'll give you a whole lot of information, which is actually quite astonishing. I was just seeing a demonstration of it back there, which Money was showing me on his iPad. If you want to go to a restaurant, and if you're on a particular destination, and you want to know which is the closest restaurant of choice, Chinese, Italian, Indian, whatever, it'll immediately tell you according to your location and how far the next restaurant is going to be. Then you can book your table through this device, tell them how many people are coming, they'll book a table for you, and you can order your menu. And then you can ask them what is on the menu, and you can actually conduct the kind of food or what it is going to taste like. You can increase the chili quotient, you can reduce the salt, everything you can indicate through this system, and they do it and have it ready for you by the time you get there. So these are little minor things, but I'm sure that the idea really is that to provide these services while you're sitting at home. You want to buy something, a camera for example, and you get onto Justdial, you type in what type of camera you want, and it'll give you a list of hundreds of stores where this camera is available, along with the price of the camera. And the price, and that's the good part of Justdial, it's lower than what the MRP rate is, and that is the deal that Justdial has done with several vendors. It'll show you what is available in their store, the kind of colors that are available, black, red, blue. Everything is there on your screen. All you have to do is just touch or punch in the product that you want, and you can have it home delivered, cash on delivery, or you can go through your credit card, make the payment, and it is dropped over within hours at your house. These are the kind of facilities that are available. So really it's enhancing your capacity to not bother too much about having different managers and assistants and so on and so forth who sometimes do this work for you. Your domestics go out and buy your groceries. You can do it sitting at home. And you tell your wife overnight, I want to have Italian tomorrow, and they'll do it overnight on the phone. No, this one's not doing it right now. But, and by the morning, everything is set and ordered. And really, Money, perhaps, you are more acquainted with this facility, so maybe you'd like to add a few words to this.
Can I do better than that? All I have to say is, our business is a very difficult business to be in. Because you have to constantly change, constantly innovate, just to be in business and again compete. We have to keep an eye on our users because the users are constantly evolving. So what we have noticed in the recent past is, particularly in India, for a while we've been complaining about infrastructure in India, but thanks a lot in the recent past, the internet infrastructure has tremendously improved. Especially when you look at, of course, the broadband penetration nationwide. Apart from that, the mobile penetration, mobile internet penetration, low-cost data by mobile service providers had, led to millions of Indians actually being able to access internet 24/7. And also thanks to low-cost handheld devices like a cell phone, which is now a smartphone. And a couple of years back, we all used cell phones for text, email, and maybe making voice calls. But today, the phones that we have is a mini computer in our hand, and we can actually do many things. One of the most important things we do is we stay in touch with the world. We use internet. In my wife, my house, my wife, she has been using internet for almost a decade, but then she was never an ardent fan of internet. I mean, I never saw her regularly in front of the None PC. of the wives are. But things dramatically changed. In about 2009-10, she opened her first Facebook account. She used to go once in a while. And then she got a smartphone. She downloaded the Facebook app. And of late, in the last 1 year or so, she's been using the WhatsApp Messenger. And she is now, I don't see them talk on phone, but actually see them constantly on the phone exchanging messages, and it's a group message. So I was looking at that, and at the same time I was also looking at my wife fretting, fuming about things that she has to do at home. So she would there's somebody out there where she's trying to order food, some doctor's appointment she has to take, or there's some product that she wants to buy, or some servicing requirement that needs to get attended. So one day I casually asked her, how about this? I give you one application, one master application, where you could do everything and you don't have to talk to anybody. It's the first time in the last 20 years of our married life, you made sense to me. So that was the inspiration. And with that, I said, I think I'm running a search engine, which has a very limited function. Because at the end of the day, we provide you the service providers, but then you have to pick up the phone, call those numbers, and get your work done. I said, why not have a search plus engine, which means you don't have to do the traditional way. You don't have to pick up the phone and talk to the person. Instead, you do it there, and then. So you want to book a table in a restaurant, you don't have to call the restaurant. You go to Justdial, search for the restaurant. There's a tab there called Book a Table. Click on it, tell the number of people, and your table is booked. Like this, as you said, A to Z. So we approach this subject in two manners. One is for the services like where you need a kind of an execution stuff, so you do it as a transaction tab. The other is actually for buying products. So whenever we want to buy products, the thing that comes to our mind, of course, when you freeze on the brand and the model of the product that you want to buy, you want to know what's the price. What's the price and where can I buy it from? He said, actually, in our Justdial, when we have been running this service for so many years, we actually discovered that most of our vendors offer much better price than what other leading even online stores which claim to have the deepest of discounts. We said it's such an easy job for us. Just take them all online and give the user a wow experience that one search, he can get dozens of vendors for the same, like the camera example that you gave. You can choose a color, I can see multiple vendors, each one quoting 17,500, one for 16,900, and then 18,000. You look at the trust factor of these vendors. So I can buy from the cheapest guy, but is he the best guy to buy from? No, Justdial provides you what we call a trust factor. A trust factor tells you how many years the business has been in this business, and how many ratings he has, and what is his average rating, and is there a Justdial verified stamp? I want to tell you, look for that. If that is not there, don't buy it. So that's it. That's the Search Plus engine platform that we have launched. It's one of its kind in the whole world, I'm told. And we are very excited about it. And one of the things that we discussed at the back, there are many stores, for example, that are not tech savvy, do not have facilities, or are unable to use internet the way most of us do. But they get an opportunity to open
virtually अपनी दुकान खोल सकते हैं वो Just Dial के ऊपर. They may not be connected and they may not have the facilities to connect, but Just Dial will provide that opportunity for them. And in typical, our local language, उनकी दुकान हम अपनी दुकान में खोल सकते हैं. बिल्कुल सही बात है. एक्चुअली वर्चुअल शॉप रहेगा उनका. आप उनकी दुकान सर्च करेंगे तो पूरी के पूरे दुकान वहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट्स बेचते हैं, वो उनके प्राइसेस क्या भाव में बेच रहे हैं, सब कुछ आपको मिलेगा उसमें. Yeah, so in a sense, you may never have heard of them, but because they're on Just Dial, you get to know them, you get to know what they provide you, you get their prices, and you're sending customers to them, which perhaps could be a lot more than what they were normally getting. Thank you, sir. Oh my God. Yes, right. So how easy is the application to use? Did it take you some time to go through it and understand it, or was it quite user-friendly? I don't know. I wish we could have a demo. Can you do a demo of the service, please? Sure. Justdial Search Plus. Justdial is not just a search engine, but a search plus engine. Save time, save money, and experience convenience like never before. Log on to justdial.com. I had a few questions to ask Mr. Bachchan. Couple of things. I have a very long list. I don't want to take too much of your time. जैसे मैंने बताया था विजय कि हमारे business में we have to do continuous innovation, continuous improvement to stay in business actually. हमारे यहाँ हम अगर change नहीं करते, change is only constant in our business. Now हम सब ने आपको देखा 1970s में आप राज कर रहे थे, 80s में भी राज किया, 90s में भी राज किया, and in 2000 also. So I'm very curious to know how you kind of handle this. आप हमको बुलाते रहते हैं इंडोर्स करने के लिए, हमारी जिंदगी चलती रहती है. No, but really, I'd actually like to give credit to Just Dial and or to any business. I think one of the first things that I'm not a businessman. I've been through several terrible experiences. So the little that I have come to know of that is that you must be sure of what you're doing. You must be sure of what competition is going to be, and sure of a vision for the future. And I think that is what Just Dial does. It has thought out beforehand where it wants to go, what kind of competition will come, and to always be a couple of steps ahead of that competition. That's very important. So Search Plus is a concept which I believe is thinking a couple of steps ahead of any kind of competition or ahead of any other company or organization that is wanting to think. In our business, in the film business, I guess we want to do the same thing. We are judged by people like you. Our audiences are the ones that make us. And if we are not on the same plane as them, then we're doing something wrong. Audience tastes, they change. The audience will decide what kind of governance you need. The audience will decide what kind of movies they want to see. The audience will decide which actor they want to like or dislike. And therefore it's important to be in tune with what the audiences want. And that is one of the most difficult things or tasks in my business. How to know what they're going to like or dislike. If we are able to judge how the audience will appreciate a particular film, then we want to make those kind of films. But we are never able to exactly know how the audience mind is going to go. One factor that perhaps corporates have in mind is that you have a research division, you have a vision, because these are all mechanical, technological things. Audiences will change with each decade. A guy that was 10 years old in 1980, by 1990 he's 20 years old.
and his whole thinking, his whole process, his habits, his likes, dislikes have gone through a sea change. So if you are able to conceptualize something of what this 20-year-old is going to be doing 10 years from now, or sorry, what this 10-year-old is going to be doing 10 years from now, then you're on the right path. And I guess that is something that most filmmakers and people in our business also keep doing. Thank you so much, sir. So well said. लेकिन एक और सवाल, हम जब भी कुछ कोशिश करते हैं करने के लिए तो ने शेयर्स बड़े होते हैं, हमारे साथ तो हुआ। तो जब मैंने 96 में वापस I wanted to start Justdial all over again, which after failing once and also failing in another business in the meanwhile. So 96 में मैंने जब स्टार्ट किया तो लोगों ने, मेरे जितने लोग मुझे जानते थे और वैसे भी any other person I met, they said चलेगी नहीं भैया, चलेगी नहीं। And फिर हमने उनको wrong prove किया, तो हमने चला के दिखाया। फिर हमने जब 2007 में हमने अपना इंटरनेट वर्जन चालू किया तो उनका ये सब तो ठीक है, वॉइस वगैरह कर लिया आपने, बस इंटरनेट तो नो वे यू विल सक्सीड। एंड हमने उनको भी रॉन्ग प्रूव करके दिखा दिया। फिर हमने इन पब्लिक जाने की बात की तो इन्होंने कहा कि यार कहाँ तुम्हारी जैसे कंपनी पब्लिक नहीं जा सकती है। एंड दे ऑल्सो सेड लाइक हाँ रॉन्ग टाइमिंग है, देखो ये जो IPO कर रहा है चलने वाला नहीं है, अंडर सब्सक्राइब हो जाएगा। फिर हमने उनको भी जरा सा रॉन्ग बता दिया कि भाई 12-13 सेंस ओ सब्सक्राइब। मैं सिर्फ एक चीज़ पूछना है, ये क्या आपके साथ भी हुआ है कि व्हेन यू ट्राई टू डू सेवरल थिंग्स, गेटिंग इनटू एक्टिंग इटसेल्फ एंड दैट स्टेज इन लाइफ एंड मे बी लेटर a career like what you did in KBC, like hosting it, have you had naysayers around you, like majority of people saying nahi? उसको थोड़ा सा पहले सोचना पड़ेगा। अगर ये लोग जो गलत सोचते हैं ये ना होते तो आप प्रोग्रेस नहीं करते। हमारे यहाँ कभी भी नया संसार में, जीवन में जो लोग आपकी निंदा करते हैं उनकी आपको प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि आपको वो प्रोत्साहित करते हैं कि आप और आगे बढ़ें और अच्छा करें। हो सकता है कि अगर आपकी निंदा ना होती या आपको कोई गाली ना देता या आपके खिलाफ कुछ बोलता तो आपके अंदर वो इच्छा नहीं होती कि और आगे बढ़ें या किसी को हम दिखाएं कि हम जो आप कह रहे हैं वो गलत है, हम और अच्छा कर सकते हैं। तो जब तक वो जो लोग निंदा नहीं करेंगे आपकी, तब तक आप प्रोत्साहित नहीं होंगे। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको इसे अपने आप को बहुत सौभाग्य मानना चाहिए कि जितने लोगों ने आपकी निंदा की है वो अभी भी हैं और कल भी लोग निंदा करते रहिएगा इनका, ताकि और आगे बढ़ें। इनफैक्ट हमारे यहाँ इसको हम गुड ओमेन मानते हैं कि हम जब भी बोलते हैं कि भाई बताया सर्च प्लस के बारे में लोगों को, कितने ने ना बोला है, सिर्फ बहुतों ने ना बोला, चलो लॉन्च करते हैं। तो एक और सवाल था अमित जी, अपने जीवन का तो बताया नहीं मैंने। तो हम भी जब फिल्म इंडस्ट्री में आए तो सबने यही कहा कि आपका कुछ होने वाला है नहीं, आप जाइए, आप लंबे बहुत हैं, दुबले हैं, कोई हीरो के साथ काम नहीं करेगी, और आपके पिताश्री जो हैं वो कवि हैं, आप जाइए घर करके कविता, कहाँ फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं आप। तो वो सारी चीज़ों को याद रखना चाहिए। और फिर जैसे कि मणि ने कहा कि उनको गलत साबित करने के एक प्रोत्साहन मिला कि नहीं हमें कुछ करके दिखाना है, और जहाँ जहाँ भी लोगों ने ना कहा था उन सब से जो बात थी वो उल्टी हो गई। एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँ, कभी इस इरादे से नहीं करना चाहिए कि उसे मुझे दिखाना है कि मैं जो ना आपने कहा था वो उसका मैंने विपरीत किया, बल्कि कभी आपको आगे मौका मिले तो उनको अपने साथ जोड़िए। थैंक यू सर, वेरी वेल सर, वेरी वेल सर। जितने लोगों ने मेरी निंदा की थी उन सब की फिल्मों में मैंने काम किया बाद में। एक और सवाल पूछना सर, हमारी कंपनी में वी हैव वेरी लार्ज यूजर बेस, काफ़ी मिलियंस ऑफ लोग यूज़ करते हैं, लेकिन दैट इज़ नोवेयर क्लोज टू योर फैन बेस। तो यू हैव सच ए लार्ज फैन बेस एंड इट्स बीन लॉयल टू यू फॉर सेवरल डेकेड्स। तो आप हमें क्या एडवाइस देंगे टू रियली टेक दिस, लाइक हमारी फैन यूजर्स की लॉयल्टी भी रहे और इससे आगे जाके और भी लोग हमारा सेवा यूज़ करें?
So join Twitter, Facebook and blog. Keep talking to people. Keep connecting with them. Many people think that this is a facility that is of no use really. But I think कि जितने भी हमारे चाहने वाले होते हैं, अभी तक हम उनके चेहरे नहीं देख पाते थे, यदा कदा उनकी कभी आवाज़ सुन लिया करते थे, लेकिन अब इंटरनेट के ज़रिए से या जस्ट डायल के ज़रिए से हमें उनके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो गई। उनका चेहरा हम देख सकते हैं, क्या वो कह रहे हैं उसके बारे में भी हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये एक जो व्यक्तिगत कांटेक्ट होता है, ये इंसान के जीवन के लिए बहुत अच्छा होता है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर हम इस तरह का कांटेक्ट, जितने भी आपके लोग हैं जो आपके इस पे आएंगे, अगर वो बना रहे तो आपकी संख्या और बढ़ेगी, मेरा ऐसा मानना है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यदि आपका काम ठीक नहीं होगा तो तरक्की हो नहीं सकती। तो आपका काम जो है वो सही होना चाहिए और आपका एक जो ह्यूमन कांटेक्ट है वो हमेशा बरकरार रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। इनफैक्ट आई वांट टू शेयर विद यू, मैं जब अमित जी को पहली बार मिला था टू साइन अप फॉर जस्टाइल, द फर्स्ट मीटिंग आई वाज ऑल एक्साइटेड, फर्स्ट टाइम आई मीटिंग मिस्टर बच्चन, तो आई रिमेंबर यू वर वेयरिंग ए शॉल एंड दैट कुर्ता, योर ट्रेडिशनल दिस थिंग, आई वाज लाइक, मैं तो बेहोश होने वाला था उस टाइम। तो गया मैं, आई वाज नर्वस, मैंने कहा आज हाँ बोल दे, मैं बट आई वाज टू रियली एक्साइटेड, यू नो। तो मेरे अदर को फाउंडर्स और बाकी सब रेडी वेट कर रहे हैं कि कब मनी बाहर आए और पूछे कि हो गया कि नहीं। तो वी मेट, आपने बहुत सारे सवाल पूछे थे मेरे से बिजनेस के बारे में और तो मैंने फिर बोला तो सर फिर साइन कर ले एग्रीमेंट। तो आपने एक स्मोक दिया आपका टिपिकल स्टाइल में, हाँ हाँ हाँ। हमने कहा नहीं हम सोचेंगे, विल डिस्कस। फिर आपने हमें सेकेंड टाइम बुलाया था, तो हम सेकेंड टाइम आए तो और डेप्थ में गए। तब तक आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमारे बारे में जान चुके थे, हमारे कंपनी के बारे में। एंड द क्वेश्चंस यू हैड आस्क्ड, मेनी ऑफ माय इन्वेस्टर्स हैव नॉट आस्क्ड टिल डेट। तो दैट डिटेल ऑफ दिस थिंग, फिर मुझे वो भी याद है, वो मीटिंग में मैं फाइनली तो सोचा आज तो हो गया ये। मैंने कहा सर फिर पक्की समझे? तो आपने कहा नो नो वी लेट यू नो। एंड फाइनली द थर्ड मीटिंग वी फाइनली साइन द एग्रीमेंट। आई वांट टू आस्क यू, लाइक आप जो हर चीज़ करते हैं, डू यू रियली अप्लाई योर माइंड so deep into it, or it's like your style of doing it? Because I went back immensely inspired. मेरे ऑफिस में भी लोग चेंजेस देखने लग गए मेरे काम करने के तरीके में। सर इसके बारे में मेरे पास कोई ख़ास जानकारी नहीं है, केवल इतना कहना चाहूँगा कि दूध का जला जो है छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। हमारे व्यावसायिक जीवन में कुछ बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जो हमारे लिए एक सीख बन गई, और अब दोबारा उस कुएं में ना जाएं, उससे बचने के लिए हम ये 3-4 बार जानकारी आपसे हासिल करनी चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक देना है आपको, उसके बाद वी कैन टेक क्वेश्चंस फ्रॉम द मीडिया। बहुत सोच समझ कर के ये दिया पुरस्कार इन्होंने, समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। सोना है, गोल्ड कहाँ जा रहा है किसी को पता है? So any questions from media? या फिर आपका नंबर कहीं लिस्टेड है? ऑलरेडी बहुत सी ऐसी सुविधाएं यहाँ पर प्राप्त हैं, और उनके किए किराए पर क्यों पानी फिरवा रहे हैं? बहुत सारी किताबें हैं, मैगजीन्स हैं, जानकार लोग हैं जिनके पास सुविधाएं हैं और जिनको इस बात की जानकारी है कि रेटिंग किस तरह दी जाती है फिल्मों को, उसका समीक्षीकरण करते हैं, क्रिटिक्स लिखते हैं। तो ये सुविधा ऑलरेडी है। मेरे ख्याल से जस्ट डायल जो है वो ऐसी सुविधाएं आपको देना चाहता है जो आप कहीं और प्राप्त ना कर सकें। Sir, this is related to like people those are
in the industry, film industry, where like there are lots of aspects like production से related है. बिल्कुल है उसके बारे में. हाँ. लेकिन अमित जी को मैं जब मिला था, मैंने कुछ डेमो करके दिखाया था उनको. It's a coincidence है. मैंने आपको सर्च करके दिखाया है डेंटिस्ट इन जुहू, और उसके सबसे पहला रिजल्ट अमित जी का पर्सनल डेंटिस्ट का नाम था. And he happened to be an advertiser in Justdial also. उसमें Justdial verified stamp भी था. Maybe that convinced you. So, but then we have lots of film directories also. Like we have. But we have everything about films. You want to know about any production house. You want to know about how to hire a camera. Anything about, even about artists. You know, even about any particular aspect of film industry, we cover it in Justdial. आपको हर चीज़ की जानकारी है इसमें. सर, अभी मैं सोच रहा हूँ कि घर में जो ग्रोसरी है वो भी प्याज टमाटर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो मैं सोच रहा हूँ कि उसके बारे में ये सुविधा मैं इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ. और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कहीं हमारा टेलीविज़न ख़राब हो गया, एयर कंडीशनर ख़राब हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम में पदार्थ खरीदने की जो बात होती है, वो इतने ज़्यादा मैं पदार्थ खरीदता नहीं हूँ, तो मैं नहीं कर सकता हूँ. लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये छोटी चीज़ें ही होती हैं जो बहुत कष्ट देती हैं. पर्सनल लाइफ में ये आपको क्यों बताऊँ? हेलो, So what we presented today is one of those future visions that we're just rolling it out. You know, as I always say, we only focus on our users. जैसे जैसे हमारे users they get evolved, we kind of give the products that they want. We try to be ahead of in the curve, so that whatever the user wants, he gets it. Today we feel that it's not just search. The user wants to do search plus transaction, everything online. So from here away, so obviously we get more and more millions of businesses participate in this and get every one of you Indians to participate, use our services. Also probably take Justdial to different parts of the world, because this is such a, I usually meet like a lot of investors. In fact, 80% of our investors or 90% of investors are from abroad, and they are from US and other countries, and they come and say, you're so unique, your company is so unique. Why didn't you start anywhere else in the world? There's so much opportunity. So a lot to do. We'll take one step at a time. You wanted to know how we think about the future, and my future plans is to, just keep working. My goals, I never have had an opportunity to set goals. I don't even believe in that, because I just feel that, the moment you set a goal, it's a very cliched expression. I just hope that there is some challenge and some opportunity that future directors will provide me, and hopefully that I'll be able to deliver those goods. But what is really interesting is that each decade has been providing a great expansion, not only in our medium, but in other mediums also that are interconnected. We had one state channel, Doordarshan, some 20-30 years ago, and look where we are now. Almost 600 to 800 channels in one country. That's like more than all the channels of the entire universe put together. You have to respect that. And therefore the growth of television, we have about 300 million mobile penetration, I believe, and another 5 years likely to go up to 500 million. That's unheard of in any other part of the world. And I feel very proud of the fact that those very things that India was criticized about, we were always criticized about our growth of population and so on and so forth, are now being looked upon by these developed nations as a center for great consumer consumption. And that bodes very well. I hate being called the third world country. I hate being India called a developing nation. I want to be the first nation of the world, and I want to be a developed nation. And I think that we're all moving forward in that direction.
आपने मेंशन किया पर हाल ही में अगर हम देखें तो कई सामने ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस आए हैं जिसमें जुडिशियल सिस्टम काफ़ी डिले करता है उनके नतीजे लाने पर। क्या आप मानते हैं कि अब वक्त है कि हमारे जुडिशियल सिस्टम में एक अमेंडमेंट आने चाहिए कुछ? इसके ऊपर मैं तो कह नहीं पाऊँगा कुछ, और मैं ऐसा मानता हूँ कि चीज़ें जो हैं ये जनता स्वयं करती है, और जैसे हमारे पास साधन आते जाएंगे या कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जहाँ पर जनता अपनी आवाज़ को व्यक्त कर सके, ये चीज़ों में बदलाव आएगा। उदाहरण के तौर पे मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि जब निर्भय कांड हुआ दिल्ली में, तो जो नौजवान पीढ़ी सड़क पे उतरी, सर्दी में जिसने डंडे खाए, वाटर कैनन्स को उन्होंने उनका सामना किया, वो किसी भी आइडियोलॉजी से प्रभावित नहीं हुए थे, वो किसी भी राजनीतिक दल से प्रभावित नहीं हुए थे, वो अपने हृदय से आए थे वहाँ। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये एक जागरूक देश, एक जागरूक जनता की एक आवाज़ थी जो बाहर आई। तो धीरे धीरे जिस तरह हमारे समाज में परिवर्तन होता जा रहा है, ये जनता की तरफ अपने आप उठ करके आई। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो भी कठिनाइयाँ, जो कमियाँ हैं, वो एक न एक दिन सुधरेंगी, क्योंकि वो जनता की आवाज़ के द्वारा आएंगी। फिल्म इंडस्ट्री आपके लिए एक परिवार की तरह है। जैसे आपने कहा कि जिन लोगों ने आपकी निंदा की उसके साथ भी आपने फिल्में की। इसी परिवार के एक सदस्य 1 महीने के लिए फिर जेल से छुटकर आ रहे हैं, कितनी खुशी आपको है संजय दत्त की? ये तो ये कानून के दायरे की बात है, मैं कानून के दायरे में बात नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अगर उनको जैसा कि कानून है, उसके कायदे के कानून के अनुसार वो अपने उनको ऑर्डर मिला, वो अच्छा है, नहीं है तो गलत है। खबरों की बात चली है तो आप राज कपूर साहब के फेमस सॉन्ग पे परफॉर्म कर रहे हैं, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान। जी। ये कितना सच है और क्या एग्जैक्टली हुआ? ये सच है, और ये दरअसल संजय दत्त प्रोडक्शंस की फिल्म है, और वो कहानी में एक ऐसा मौका आता है जहाँ पर जो हीरो है फिल्म का एक गाना गाता है, वो मैं उसमें शामिल हो जाता हूँ। इस पोएट्री से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, बिल्कुल अच्छा है ये। All right, thank you so much, ladies and gentlemen. Let's give Mr. Amitabh Bachchan a big round of applause. And Mr. D.S. thank you so much. We'd like to thank you all so much for being here tonight.